Well, good morning, everybody. And once again, welcome to my chat show that is Unsung Heroes. And this is a chat show which I have started almost 2.5 years back. And this is आज जो मेरा है 107th एपिसोड है. एंड इस चैट शो के द्वारा मैं बिलासपुर के यूथ को एक नया आवाज देने की कोशिश, एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता हूँ. एंड ऑल्सो so that these people who are doing a work at the ground level, they can get exposed to the outside world. And not only that, I also bring young entrepreneurs and young influencers to my chat show so that the youth of Bilaspur gets motivated. And ultimate aim is that there should be a wider exposure to the youth of Bilaspur, which I found was somewhere lacking. And once they get a wider exposure, they can think out of the box and think more, and then they can flourish so that they can take Bilaspur to the next level. That's the basic aim. And with that, this episode, this 107 episodes, I pay my gratitude to all my viewers for supporting me, giving me a very, very positive feedback about my initiative. And this is a small, minuscule attempt from my side to take Bilaspur to the next level. So today also, as you can see, I have a guest who is very young, energetic, beautiful, and intelligent. So she is basically from a journalism background, and as she started her journey in the journalism, she switched over to social work, and then now she's into the media and communication. So we'll talk about that as we go along and know all about Chandni. And then I also got her here because she's also from Bilaspur, and what people think about Bilaspur is a very small city, and people from Bilaspur cannot go out and then excel themselves. But she is one example where she is born and brought up in Bilaspur from a very conservative family. उसके बावजूद भी वो बाहर जाके she has gone to places all across India, and then also we'll also know about what are her future plans. So welcome, Chandni. Thank you very much for accepting my request and being there on my platform. Thank you and welcome. Thank you. Thank you so much. I'm obliged to be here. I'm looking so forward to the conversation that we are going to have. Thank you so much. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो हम थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज छत्तीसगढ़ हमारे व्यूअर्स. हाँ जी बिल्कुल. मेरा भी बीच बीच में इंग्लिश आ जाता है, बट दैट्स ओके. हाँ जी. So we'll switch over and on and off to English and Hindi. Okay. So Chandni, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, I just wanted to know कि आपके चाइल्डहुड ड्रीम्स क्या थे, बिकॉज हम बचपन में हम बहुत सारे सपने देखते हैं. तो आपके क्या सपने थे? हर बच्चे का सपना होता है. जब मैं बहुत छोटी थी तो आई रिमेम्बर, क्योंकि पहले सिर्फ ये होता था आपके दिमाग में कि आपके पेरेंट्स आपके अंदर माइंडसेट रखते हैं, या तो आप इंजीनियर हो या तो आप डॉक्टर हो. देयर आर नॉट मोर थिंग्स देन दैट. आपको या तो आप डॉक्टर बन जाओ या तो आप इंजीनियर बन जाओ. तो बचपन से मुझे लगता था कि मैथ्स तो मेरा अच्छा नहीं है, तो इंजीनियरिंग इज नॉट इन द लाइन, बट मैं डॉक्टर बन सकती हूँ. एंड डॉक्टर्स की जॉब जितनी हेक्टिक हम लोगों को अभी पता चलती है, उस समय बहुत फैंसी लगती थी कि टेकिंग केयर ऑफ पीपल, कमिंग बैक होम. और जो टीवी सीरियल्स में आप देखते हो, आप इमेजिन करते हो वैसा ही होता होगा. बट एज सून एज मैं थोड़ी बड़ी हुई और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ्स तो अच्छी नहीं है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री भी तुम्हारी बहुत अच्छी नहीं है. तो यू नीड टू चूज समथिंग विच यू एक्चुअली लाइक, और आप जिसमें एक्सेल कर पाओ. आई एम गुड इन अकेडमिक्स सिंस चाइल्डहुड, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैंने somebody who is outspoken, जो जिसको चाहिए कि उसकी बात लोगों तक पहुंचे, मैं उनमें से आती हूँ. तो इसलिए आई थिंक दैट वाज द पार्ट जब मैंने 9th और 10th में रियलाइज करा कि आई एम नॉट somebody who is made for typical या stereotypical fields. I have immense respect for engineers or doctors in that matter, क्योंकि जो वो कर पा रहे हैं शायद वो मैं नहीं कर सकती कभी. तो मेरे को लगता है ड्यूरिंग माई 9th एंड 10th मैंने रियलाइज करा कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग जो कि थोड़ा अलग होगा, बट इट विल मेक मी ऑल्सो हैप्पी. तो आई थिंक बचपन से तो आई ऑलवेज थॉट कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, बट somehow I am here now. हाँ जी, that is about my childhood. Okay. Great. So I think that's a right decision, because I should say that आप बहुत लकी हो, because 9th and 10th में आपने डिसीजन ले लिया. लेकिन क्या होता है कि लोग जनरली उस एज में दे नॉट एबल टू टेक द डिसीजंस, और उसके बाद जो मम्मी पापा बोलते हैं उसको करते हैं. एंड
at a later date they realize कि this is not what I wanted, and जिंदगी भर मतलब frustration में काम करते रहते हैं, but they don't enjoy the work. बट कहीं ना कहीं आई थिंक हाँ, हमारे टाइम पे ऐसे होता था, इंजीनियरिंग बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, और अगर हमने बीकॉम ले लिया मतलब हम वीक स्टूडेंट हैं। बहुत वीक स्टूडेंट है, आपको फैमिली ऐसे देखती है घर पे कि फैमिली नहीं, सोसाइटी भी वैसे देखती थी। हाँ, इन तो जनरल कि ये सोच रहती है। और जैसे टचवुड अगेन, माय मॉम इज वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी, मतलब मेरी मम्मा इज समबडी जिनकी वजह से आज जो मैं कर पा रही हूँ। आई थिंक अगर बिकॉज आप समझो, मैं सिंधी, एक बहुत सिंधी कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ। माय grandfathers, my grandparents, my father, everybody comes from that mindset. But मेरी ओके, मम्मा, she comes from a very open background. और even if she does not, उनको लगता है जो मुझे नहीं मिला मैं इनको दे सकती हूँ। एब्सोल्युटली। एंड अलॉन्ग विद दैट उन्होंने मेरे पापा को भी कन्विंस करा है कि आप परस्यू करने दो इनको, क्योंकि वो सही है, उनको करने दो, उनको समझने दो वो क्या करना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाई आई वाज अ गुड डिसीजन मेकर। मतलब मैं हमेशा से ही जल्दी मैंने डिसीजन मेकिंग सीखी है। आई एम नॉट समबडी जो बहुत कंफ्यूज होती है कि ये नहीं ये नहीं ये। तो आई हाँ, थिंक मेरे दैट ख्याल इज से कहीं व्हाट ना आई। कहीं नॉट ओनली गुड डिसीजन बट आल्सो राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, या या because if you see today all these graduations and all those things, the traditional या graduation degrees will not work. या Something like creativity is only going to survive in the गोइंग टू next सर्वाइव। 4 to 5 या years. And I think you have डेफिनेटली। already traveled the path there. या So you're या already ahead. So या looking back and connecting the dots, I think आपने बहुत अच्छा decision लिया उस वक्त. So your parents should be proud of you today. थैंक यू थैंक यू। Okay, great. So you loved writing and reading. बचपन में भी आपको लिखना उखना पसंद आता था? आई थिंक हाँ। रीडिंग मेरी फिर भी थोड़ी सी कम है, बट आई एम ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट मोर इनटू माय हैबिट। अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट करा है 21 डेज ऑफ रीडिंग, जिसमें मैं Okay. हर दिन 10 पेजेस पढ़ती हूँ। बिकॉज आई थिंक मेरी मम्मा मेरे को बोलती हैं कि हर हैबिट, कोई भी हैबिट अगर डेवलप करनी है तो डू इट फॉर 21 डेज। हम्म। तो एंड शी बिलीव कि हाँ ठीक है तुम कर लोगे, फिर 21 डेज के बाद आई ट्रस्ट यू। तो ये लाइफ में मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई किया है कि मैं कोई भी चीज अगर करना चाहती हूँ तो मैं 21 डेज के लिए उसको करती हूँ। जैसे मैं पहले बहुत लेट स्लीप इन करती थी, तो फिर मैंने 21 डेज ट्राई किया दैट आई शुड वेक अप थोड़ा सा अर्ली। हम्म। तो नाउ आई थिंक आई एम देयर। सेम गोज फॉर बुक्स। आई थिंक मैंने अभी अभी रिसेंटली एक बुक कंप्लीट भी करी है। तो आई थिंक somebody जो बुक्स नहीं पढ़ता था, बिकॉज आई वॉज इन टू राइटिंग Okay. हमेशा से, बहुत ज्यादा, स्पेशली इन टू स्टोरी टेलिंग। हम्म। दैट इज माई फोटे। कि मैं लोगों से बात करने के बाद उनके बारे में लिख लेती हूँ, उनके Okay. किसी लाइफ के एक पार्ट को लेकर। एज मच एज मैं कहानियां फिक्शनल चीजें लिख सकती हूँ, बट मेरे को लगता है मेरा फोटे है स्टोरी टेलिंग। जो हो रहा है, अगर आप मेरे को कोई बता देंगे कि ये स्टोरी है, यू हैव टू राइट अबाउट दिस, तो मैं उस पर बहुत बेटर कर पाऊँ। मैं कभी भी कोई कॉन्सेप्ट सोचती हूँ तो मेरा स्टोरी टेलिंग पर ही दिमाग जाता है। Okay. तो आई थिंक That's हाँ जी। good. तो बचपन से ही आई थिंक मैंने राइटिंग में तो मैं इंटरेस्टेड रही हूँ। एंड सिंस आई वाज यंग, मैं स्कूल स्कूल में ही मैंने डिबेट्स में और राइटिंग वाले कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। हम्म। क्योंकि मैं करिकुलर एक्टिविटीज में थोड़ी एक्टिव थी। और सेम गोज अभी भी। अभी भी आई एम व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन जर्नलिज्म, तो दैट वाज कि मेरे को न्यूज़ लिखनी पड़ेगी पहले। एंड राइटिंग हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माय जर्नी, वेरी बिग पार्ट। Okay. So like you said that you are from a conservative family, मतलब या एक from a हाँ जी। business background, and या Bilaspur में Sindhi family means it's a bit. So taking the decision would have been very difficult for you. One, या to go for journalism, because कहीं ना कहीं बिलासपुर में जर्नलिज्म के बारे में maybe 2000, when did you complete 2018 19? या हाँ, अराउंड दैट so during that टाइम। period तो जर्नलिज्म मतलब उतना बिलासपुर में लोगों को ज्यादा पता नहीं था, मतलब क्या करोगे जर्नलिज्म करके, क्या करोगे, ऑल दीज थिंग्स यू फेस सम रेजिस्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी? यस डेफिनेटली। मतलब आप जब किसी को बताते हो कि आपको जर्नलिस्ट बनना है, तो आधे लोगों को पता नहीं होता है पहले, तो क्योंकि वो हम्म। इंग्लिश वर्ड है, तो पहले आपको बताना पड़ता है पत्रकार बनने वाले हो। हम्म। तो पत्रकारों को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। हम्म। तो जब आपको मैं वर्ड ही बोल रही हूँ तो आप समझ रहे हो कि वो मेंटालिटी कैसी आती है बिलासपुर। हम्म। अम, जब मैंने बिलासपुर में भी मैंने इंटर्नशिप की हुई है, बहुत सारी जगहों पर मैंने रायपुर में की हुई है। आई यूज्ड टू ट्रैवल अप एंड डाउन एवरी डे फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। आई हैव इंटर्न्ड एट टाइम्स ऑफ इंडिया।
Okay. तो मैं वहाँ रायपुर में ऑफिस था टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती थी, मैं रात को 7 बजे घर आती थी, एंड आई यूज्ड टू गो बाय ट्रेन। तो Mm-hmm. मैं मतलब अगेन माय पेरेंट्स हैव बीन रियली सपोर्टिव, माय डैड हैज ऑलवेज बीन, उन्होंने भी मेरे को एक बार ही अंडरस्टूड व्हाट शी वांट्स टू डू, उन्होंने किया है, बट अप अंटिल जब मैं चूज करना चाह रही थी तब तक मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। बट आई गॉट इनटू वन थिंग दैट ज्यादा लोगों को शायद नहीं पता है मेरे बारे में, कि मैंने जब 12th कंप्लीट किया था तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा हो गया था एडमिशन। Mm-hmm. I got into Delhi University, but I came back. I was in the one of the best universities in Delhi University. Kalindi नाम था उसका. Mm-hmm. Um, but I came back because I was homesick, Okay. Mm-hmm. and I don't think I can live out of Bilaspur for a very long time. Mm-hmm. As much as मैं बहुत छोड़ना चाहती थी उस टाइम 12th के बाद, बिकॉज मेरे को एक्सपोजर नहीं मिलेगा। आई वॉज मेरे को लग रहा था कि मैं बिलासपुर में अगर मैं कर लूंगी तो फिर बहुत मैं शायद मैं उतना नहीं बढ़ पाऊंगी। Mm-hmm. तो 3 महीने बाद मैं घर वापस आ गई कि Mm-hmm. मेरे को रहना ही नहीं है दिल्ली में। आई वॉज क्राइंग कि मेरे को घर से दूर नहीं रहना। तो आई केम बैक, और फिर मैंने जीजीयू में एडमिशन लिया था, एंड आई थिंक दैट वाज द पॉइंट मेरे लिए कि आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 1.5 मंथ, एंड आप मैंने चूज किया कि मेरे को वहां नहीं रहना है। Mm-hmm. तो आई हैव टू डू एवरीथिंग इन माई पावर दैट आई कैन, जो कि मैं जीजीयू में बेटर कर सकूँ। कि Yeah. आई हैव टू गेट दैट इन माई सेल्फ कि ये जब वहां के बच्चे कर सकते हैं तो मैं सेम ही बच्ची थी वहां पर। Mm. अगर मैं वहां जा पाई हूँ तो आई कैन डू थ्री थिंग्स हियर ऑल्सो। Yeah, I think that again is a risky decision, I should say. हाँ जी। That calculated risk of not take, because Delhi University में admission मिलना ही मुश्किल है. मुश्किल है। And once you एब्सोल्युटली। got it, means that you are at that intelligence या level or whatever it is. But then, yeah, coming back to Bilaspur and taking that risk. बट मैं भी वही सोचता हूँ कि बिलासपुर में अपॉर्चुनिटीज बहुत है. लाइक यू केम बैक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको पता है कि बिलासपुर में जितने स्टूडेंट्स उससे बहुत अच्छा कर पाओगे आप. एंड इफ यू कैन हाँ। प्रूव योरसेल्फ हियर, सो यू आर ऑन द टॉप. या एंड दैट्स अ. मतलब बट मतलब मेरे को ये लगता था कि मतलब मैंने जब अपने अपने क्लासमेट्स से मैं दिल्ली में मिली थी, मेरे को लगता था कि वो लोग बस ज्यादा वोक है, मतलब उन लोगों को पता ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियस है कि वो बड़े शहर में। एंड आई थिंक सेम जो होता है ना कैलिबर, वो बिलासपुर के लोगों में भी है, बस यही है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से और थोड़ा सा अनमोटिवेटेड होने की वजह से वो उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच नहीं पा रहे। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू आल्सो, मतलब मैंने भी यही सोचा था, मैंने बिलासपुर में इंटर्नशिप करी है, बट आई एक्सप्लोर्ड माई वो कि मैं अब रायपुर जाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने भोपाल में भी इंटर्नशिप करी हुई है, मैंने भिलाई में करी हुई है जिंदल स्टील के पास। तो मैंने ये धीरे धीरे खुद एक्सप्लोर करा है। मैं मेरे क्लासमेट्स मेरे पास आते थे कि हमको कहाँ जाना चाहिए, तो मैं उन चीजों को भी एक्सप्लोर करवाती थी कि देखो ये भी सेक्टर्स हैं जहाँ हम जा सकते हैं, rather than just being in traditional media. बिकॉज आपने जैसा कहा क्रिएटिव फील्ड इज द नेक्स्ट बिग थिंग, इट इज, मतलब आपको उसी में अपना फ्यूचर बनाना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज टर्निंग इनटू दोज लाइंस अब। यस, यस, तो ये चीजें इसलिए मेरे को लगता है कि अगर मैं अपने जूनियर्स से बात करती थी, मैंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराई हैं व्हाइल आई वाज इन कॉलेज, तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स, ताकि लोगों को एक्सपोजर मिलता रहे, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि ऐसी चीजें भी होती हैं। तो मैंने ये वाली चीजें कोशिश करी थी व्हाइल आई वाज इन माय ग्रेजुएशन इयर्स। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई ऑल्सो लर्न कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी बहुत जगह पे लैग कर जाती होती थी, बट somehow I used to get up and be like, no, it's a new day, let's do something also great and good for everybody, not just for yourself. That's great, Chandni, that you want to do something for Bilaspur and the people Hmm. of Bilaspur. Just I want to know, do you have your YouTube channel? I do. Actually, I do. I do not make a lot of content on it, Hmm. but I'm very active on Instagram. Uh, I create content on Instagram. Okay. I talk about things, and I normally just because I like to talk about subjects that people can relate to. So I make content related to that. Yeah, and on YouTube as well. You will Yeah. find my channel, but उसमें content थोड़ा कम है, but है. Oh, so what I suggest is you should start making contents and journalism and Yeah, skill development, communication skills, because that's something yeah, no, that I'm telling you because you ultimately want to come back to Bilaspur and do yeah, something for Bilaspur. So yeah, by that way, I think people, young students of Bilaspur will yeah. be benefited.
So try doing that, because that is something which is lacking in for the students of Bilaspur. Yeah, There's no exposure, like you told. yeah, yeah. So So since I have talked about topics like transgenders, मतलब जिनका okay. टॉपिक बहुत ज्यादा टैबू माना जाता था. अभी Mm-hmm. तो फिर भी इट्स ओपन, आउट इन द ओपन. मैंने तब डॉक्यूमेंट्री ये बनाई है जब इट वाज नॉट आउट इन द ओपन इतना ज्यादा. Yes. So I met two of transgenders of Bilaspur, and like the transition, the whole process of them transitioning from a man to woman. Mm-hmm. मैंने वो पूरा रिकॉर्ड करा है. I have talked to them about the whole journey. I think that is a work that I'm proud of about Mm-hmm. myself that I did. I have done a series upon deaf and dumb children, Mm-hmm. um, recording how they talk, how difficult it is for them in normal, but they are not different from other people. That is what they wanted to communicate. So Good. I made a video about that. Is it on Uh, YouTube or yeah, Instagram? yeah, it is on YouTube. Yeah, you'll find it. I'll share the link. Yeah, sure. That will Yeah. be great. So you did your grad from in journalism, and then you did your masters in advertising and Yeah, media, yeah. all the Bilaspur. No, no. I did my graduation and then COVID happened Oh. in the last year of my graduation. Mm-hmm. So I had to apply for other universities. मैंने दो तीन universities में apply करा था, and I got into one of the best universities in Central India. It's Makhanlal Chaturvedi. I always wanted कि मैं उस college में जाऊँ Mm-hmm. because a lot of my alumni, a lot of my seniors were from there. और मेरे को वो चाहिए था college. So I got into it, and मेरा मास्टर्स वहाँ से हुआ है माखनलाल भोपाल से. Okay. एंड फिर मैंने यहाँ से मास्टर्स करने के साथ साथ अपने एक्चुअल प्रोफेशनल जर्नी मैंने फिर स्टार्ट कर दी थी व्हेन आई गॉट इनटू थर्ड ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन. बिकॉज कोविड एज बैड जितना भी वो खराब था, बट इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन इन मी कि आई Okay. हैव द टाइम, आई हैव द एनर्जी. मैं अब किसी में भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ. तो मैंने, जो आपने कहा ना न्यूज चैनल वाली चीज, आई स्टार्टेड दैट ऑल्सो. इट इज एक्टिव अभी भी. जैसे मैंने बोला, मैं इंस्टाग्राम पर ये कंटेंट डालती हूँ न्यूज वाला. तो कोविड के सारे अपडेट्स ड्यूरिंग दो उस टाइम से आई एम स्टिल एक्टिव ऑन दैट, कि मैं उस चीजों पर बात करती रहूँ. तो Mm-hmm. दैट इज समथिंग दैट आई डिड कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा. Great. So, Chandni, my next thing is very inquisitive to know about is media and communication plus advertising करके. How did you go into social work? ओके, तो एक चीज होती है, वाइल हम इतनी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में होते हैं कि हमको पता नहीं होता है. हम बिलासपुर फिर भी थोड़ा सा सांस लेने दे देता है, बट आपको बड़े से सांस लेने भी नहीं देते हैं. Mm-hmm. तो एक चीज जो मैं देखती थी लोगों में जो लैक करती थी, द रीजन मेरे को बिलासपुर में वापस आना पसंद है, बिकॉज यहाँ के लोग काइंड और एम्पथेटिक है, Yes. Mm-hmm. कि डाउन टू अर्थ है, हम्बल है. एंड बचपन से ही मेरी मम्मा ने हमारे अंदर ये चीजें इंस्टिल करी हैं कि कितने भी आप बड़े हो जाओ, आप ये नहीं भूल सकते कि आप कहाँ से आते हो और आपको हम्बल रहना है. Roots. Mm-hmm. रूट्स आप नहीं अपनी भूल सकते हो. तो दैट इज, मतलब माय, हम चार लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट करा था. मी, अंशुल इज माय एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन है रियल, आयुष्मान एंड आकाश. आकाश इज द वन हु इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ह्यूमंस ऑफ छत्तीसगढ़. Mm-hmm. जब हम थोड़े वो हो जाते हैं कि थोड़े से थक जाते हैं कभी कभी, तो आकाश इज द ड्राइविंग फोर्स, बिकॉज देयर हैज टू बी अ ड्राइविंग फोर्स ऑल द टाइम. Mm-hmm. बट हाँ, तो एम्पथी वाली चीज जहाँ तक आती है, आई थिंक दैट इज व्हाट लेड टू ह्यूमंस ऑफ छत्तीसगढ़. अलॉन्ग विद दैट हमको लगता था कि हम ये करें, बट हमको प्लेटफॉर्म नहीं पता होता था कि कैसे करना है. तो देर आर पेजेस लाइक ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क, जो बेसिकली यही करते हैं. वो बुक्स भी अपनी प्रिंट करवाते हैं. तो आई थिंक हमारा नेक्स्ट स्टेप भी शायद वो हो कि हम बुक पे अपनी स्टोरी पूरी प्रिंट करा दें. बट हमने ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क से इंस्पिरेशन लेने के बाद ये पेज स्टार्ट करा था, वेयर वी वेंट आउट एंड वी हैड टू टॉक टू पीपल, and I think that is what gave birth to me as somebody who is into social work वाली फील्ड थोड़ा सा. एंड आप आप ये, मतलब आई नो मैं अपनी मम्मा का नाम बहुत बार लेती हूँ इंटरव्यूज में जब मैं देती हूँ तो, बट आई थिंक दैट शी इज द पर्सन हु हैज फोर्स्ड मी टू बिकम अ बेटर वर्जन. जैसे कोविड में व्हेन पीपल वर अफ्रेड टू गो आउट,
मेरी मम्मा थ्रू ह्यूमंस ऑफ छत्तीसगढ़ उन्होंने 200 लोगों को खाना पहुंचाया कि खाना बना के शी यूज्ड टू टेल पापा कि आप देखे आओ, पुलिस वाले होते थे बहुत सारे उस समय, हम्म, नर्सेस डॉक्टर्स जो बाहर एंड लेबरर्स जो ट्रैवल कर रहे थे, हमको पता चल जाता था कि वो कब आने वाले हैं। तो हम वहां जाते थे शरबत और खाना लेके पैकेट्स बांध कि आप ये लो, आप ये लो। तो दैट इज द थॉट बिहाइंड सोशल वर्क। हम्म, माई मॉम इज द वो उस चीज में मेरे लिए मोटिवेटर। हाँ मतलब दिवाली पे जब हम कपड़े लेते हैं तो माई मॉम इज लाइक कि तुम कपड़े लेने से बजाय तुम अपने जो पटाखे हैं, मिठाइयाँ हैं, तुम जाके अपने, हमारे घर के पास पीछे बहुत सारा एरिया है ऐसा, तो वहां पर जाके आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो चीज। बचपन से ही आई एम बॉर्न विद दैट मेंटालिटी कि बिफोर यू आस्क गिव, पहले दे दो, हम्म, फिर देखते हैं बाद में क्या होगा। So I think that is, my mom is a real social worker. She just followed her steps. mm. Yeah, because I also work on mind and child psychology. So Hmm. what it is said is like when a boy or a girl is between 4 to 14 years, that is the time when the personality is developed. Hmm. And this personality, whatever is developed between 4 to 14 years, 70% of it is there with you throughout your life. Okay. And now, like I can make out, your subconscious mind has already been tuned in those years of 4 to 14 years as to Yeah, give yeah, and give charity and help people and go. yeah, So that's what it is there. And luckily for you, you are still there in that same field where yeah. you can do something for the society and for the people. So, but the humans of Chhattisgarh, it started during the COVID, or it was there before that? No, no, no. It started back in 2014, 15. Yeah. So Achha. it has been some time since we started that. And during COVID नहीं, उससे थोड़ा पहले हुआ था. Mm-hmm. And we started working on one random afternoon. मैं आपको बता रही हूँ, हम बैठे थे और माय सिस्टर अंशुल, शी सेड कि मेरे को ऐसा कुछ करना है ह्यूमन फ्रॉम न्यूयॉर्क जैसा, एंड आई वांट कि मैं लोगों की कहानियां सुनूं, क्योंकि हम ह्यूमन ऑफ छत्तीसगढ़ में जब हम मीटिंग्स करते हैं तो हम ये चीज बोलते हैं, कहानियां बहुत है, कुछ अंदर है कुछ बाहर है। और ये भी है कि इतने सारे बोलने वाले लोग हैं ना कि कोई सुनने वाला बचा ही नहीं है। Mm. तो हमने यही सोचा था कि हम ये ऑफर करेंगे दैट हम सुन रहे हैं, आप बताओ हम सुन रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज वेयर इट गेट बेटर, कि आप अगर लोगों से अपनी कहानियां शेयर कर लेते हो तो यू फील बेटर अबाउट इट। Yes, absolutely. तो दैट इज व्हाट आई थिंक हैपेंड विद ह्यूमंस ऑफ छत्तीसगढ़ इन जनरल। हम वन एक रैंडम आफ्टरनून को हम बैठे थे और हमने सोचा कि हमको ये करना है, हम चारों साथ में थे। एंड हम बाहर गए, हम, आपको पता होगा गोल बाजार है, गोल बाजार वाले एरिया में हम एक की चेन की बनाता है, दशरथ नाम था, वो चाबियां बनाता था। मैं आपको उनकी फोटो भेज दूंगी एक बार। उस आदमी की मैंने कहानी पहले की थी, और बहुत सिंपल सी कहानी थी उनकी कि वो पिछले 20 सालों से चाबियां बना रहे हैं। उनकी एक बेटी है कि वो शादी कराना चाहते हैं। बहुत सिंपल से उनके वो थे रिचुअल्स, और मैंने उनको स्टोरी फॉर्म में डाला था, एंड आई थिंक दैट स्टोरी गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन। एंड आफ्टर दैट दशरथ भैया के साथ जाके बहुत लोगों ने फोटोज भी खिंचवाए थे, Mm. बिकॉज मतलब मी, आकाश, आयुष एंड अंशुल, हम लोग क्लासरूम में से थोड़े एक्टिव हैं जनरली। लोगों को पता होता है जैसे स्कूल्स में एक्टिविटीज में, तो पीपल नो अबाउट, थोड़ा सा अबाउट अस, स्कूल के थ्रू, कॉलेज के थ्रू। तो हमारे पेज को अटेंशन भी जितनी चाहिए थी स्टार्टिंग प्लान में उतनी मिल गई। Mm-hmm. एंड आई थिंक दशरथ भैया की स्टोरी, ही रिसेंटली डाइड थोड़े टाइम पहले, एंड हर थोड़े टाइम में हम उनसे मिलने भी जाते थे फिर, Okay. क्योंकि ही ऑलवेज स्टेड दैट वन स्पेशल पर्सन, एंड उनको कुछ नीड भी थी बीच में तो वी हेल्प हिम आउट, Okay. बिकॉज आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। Yeah. द रीजन इट्स ह्यूमन फॉर छत्तीसगढ़ इज बिकॉज यू हैव टू ह्यूमन फॉर ह्यूमन, यू हैव टू Yeah. स्टैंड फॉर अदर पीपल। Mm. तो आई थिंक वो चीज ड्राइव करती है इस चीज को, एंड ये बस ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग अस। So you are still active on Humans of Chhattisgarh? But या आई uh, एम, yes. आई एम, और जैसे हमारे सर, जैसे आकाश इज इन रायपुर राइट नाउ, Mm. एंड वी हैव अ टीम ऑल ओवर छत्तीसगढ़, Achha. बस्तर में, जगदलपुर में, कोरबा में, एवरीवेयर वी हैव अ पर्सन। एंड टचवुड वो लोग सिर्फ इतने अच्छे होते हैं that they are really willing to volunteer, so basically humans of छत्तीसगढ़ is not commercialized.
And we like to keep it that way. I think that is for people to read stories when they are feeling low in Yes. life. So they get motivated कि नहीं, हमारे पास हमारी प्लेट में इससे बेटर हैं चीजें, बिकॉज हाँ जी मैंने देखा है कि मतलब यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में स्टोरीज है, मतलब नॉट वीडियोस बहुत कम है, स्टोरीज ज्यादा है हाँ लोगों के जी बारे में। हाँ जी, आप यही फाइंड करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली विद इंस्टाग्राम ट्रेंड्स एंड इंस्टाग्राम एल्गोरिथम हमको भी चीजें थोड़ी बदलनी पड़ती हैं। पहले हमारा सिर्फ रिटन फॉर्मेट में जाती थी चीजें, बट उसके बाद फिर हमने उसको रील्स फॉर्मेट और वीडियो फॉर्मेट में शिफ्ट किया बिकॉज वो एल्गोरिथम ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा था। तो आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड। अभी भी वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। अभी तो रायपुर में वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज रिसेंटली कमिंग अप बिकॉज सिंस वी वर इन बिलासपुर, रायपुर से हमको उतनी स्ट्रॉन्ग टीम पहले नहीं हो पाती थी, बट नाउ दैट आकाश इज ऑल्सो इन रायपुर, आई ऑल्सो कीप गोइंग टू रायपुर। तो हमारे इवेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं, यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन होते रहते हैं ओके। बिकॉज ऑफ यूनिसेफ आई गेस। एंड ये चीजें उसकी वजह से भी बहुत होती रहती है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे हमारा कुछ ना कुछ इंटरवेंशन होता है, हम वहाँ जाते रहते हैं। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी बिग स्टेप दैट यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ हैज लेड अस टू। इट हैज गिवन अस अ प्लेटफॉर्म जिसपे हम बिलीव करते हैं उस पर बात करने के लिए। So with your job, you are presently on a full-time job, or is it you are a consultant? Because with that, I'm या asking this because with that you might not get much time or या much leave to come back to Bilaspur every now and then. So या I'm just asking for that. So I am working a full-time job. I work from 10 to 6. But again, I am somebody who has been working from 4 years now. मतलब मैं 4 साल से I am into full-time working. I was a teacher. कोविड से आई एम वर्किंग। मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हूँ, तो मैंने Okay. वो चीज़ की थी कोविड में। उसके बाद से आई एम कम्प्लीटली इनटू फुल टाइम जॉब। बट अगेन मेरा देयर इज वन थिंग दैट आई मेक श्योर, जैसे मैंने वर्क फ्रॉम होम जॉब चूज की है is because I want to not just stay outside and look at the outer world, come back, stay here and see what is going on. Because मेरे को लगता है मैंने बाहर की बहुत चीजें अभी ले ली है, मतलब I have lived outside बहुत टाइम से अभी। It has been, I came back in March to Bilaspur and I think तब से I am observing and soaking things in. मतलब मैं बिलासपुर में रहने के साथ साथ मैं रायपुर में भी काफी रहती हूँ। मैं एवरी फ्राइडे यू विल फाइंड मी इन रायपुर, सैटरडे एंड संडे, क्योंकि मेरे को लगता है मैं सैटरडे एंड संडे वहाँ दे पाऊँ मीटिंग्स में, चीज़ों में। दैट इज समथिंग दैट आई कीप डूइंग एंड आई कम बैक ऑन मंडे फॉर माय नॉर्मल वर्क शेड्यूल। या एंड आई गेट गुड जॉब्स ऑल्सो। आई थिंक it's very important to work in a healthy environment. Yes. It's a full-time job. I think that is also a very underrated thing talked about, but I think I have that in my life right now. So that gives me the liberty to do whatever I want. Great, great. Nice hearing that, Chandni. So both social work and you are utilizing your time on Saturday and Sundays Yeah, working, yeah. and instead of spending time on other things like enjoy करने का, party करने का। नहीं नहीं, वो भी मैं बहुत कर लेती हूँ। आई थिंक मैं फन सब मेरा, कुछ करना चाहिए, सब कुछ करना हाँ चाहिए। मतलब आई थिंक Life is- एवरीथिंग शुड हैव आपका आपका दिमाग हर चीज पे सेट होना चाहिए कि हाँ, आपको ये, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट टू रिलैक्स एंड टेक and अवे फ्रॉम ऑल दिस, rejuvenate बिकॉज yourself. इट विल, नहीं तो फिर आप ओवरबर्डन फील करने। हम्म। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे लिए Okay, आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन। great. So मेरा अगला क्वेश्चन है, what is success for you? What does the word success mean to you? आई थिंक success is something that मेरे लिए when I see there is something good happening, because and I was a person behind, I'm not saying the person, but I want to be a person behind that, कि something good is happening actually for that I was a part of. I think that is success for me. When I make, again, just say I want to make my parents so proud, they're so happy and content. I want my father to not work a lot. I want that when that day comes, I think that is what success will be for me in personal relationships. But when it comes to सक्सेस इन जनरल, आई फील कि अगर कोई, मैं किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, बहुत छोटे छोटे विंस लाइफ के, एंड व्हेन आई सी अदर पीपल ग्रोइंग, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट मेक्स मी रियली हैप्पी। सो आई Great. थिंक Very दैट इज well said. सक्सेस। Very well said.
And I was just trying to understand your psychology and your Yeah, subconscious mind. yeah. So it's Yeah, always giving. It's not yeah. me, and I. So that's No, it. And money, you're not spoken anything about money. Means so that itself shows the what yeah, actually success. And that's what ultimately matters. Like if you are yeah. giving, and I also strongly believe that जो भी हम देते हैं society को या Hmm. universe को, it comes back to us To in us. multiples. And when Yeah, you're giving good to people, things will come back to you in one yeah. way or the other. May not be in the same form, but yes, always I think positive. Yeah. I think financial things are also important, but that's what I am working towards that goal also. But I think whatever I have, I'm grateful and good with it. I Yeah, do not ask for more, and I try to do good with that only जो मेरे पास है. absolutely. I think Very, very, that is yeah, something. very, very good thoughts and good vision for you. That's Yeah, good. Okay, so my next question is, what did you see changes in Bilaspur? Because now you ultimately want to come back to Bilaspur. yeah, एंड बिलासपुर कहीं ना कहीं मेरा भी यही विजन है कि बिलासपुर को टीयर 3 से टीयर 2 सिटी जाना है बिकॉज नाउ ऑल दोस टीयर 2 cities are filling up. So next yeah, thing, which is the next 3 to 4 years, is places like Bilaspur and Raipur. yeah. Now, in your view, पिछले 3-4 साल में उस कोविड को छोड़ने के बाद, so did you see any changes in Bilaspur in two aspects? एक, infrastructure. Second, as far as IT is concerned, in information technology is concerned. I think when I was in बिलासपुर पहले जैसे बहुत जनरल है ये चीज कि जैसे आपको पता होगा जैसे यूपीआई पेमेंट्स है यूपीआई पेमेंट्स वर नॉट दैट एक्सेप्टेबल इन बिलासपुर if I go 3-4 years back. They were not. But now they are. Yes. Every shop has a Paytm का QR Hmm. code. I think that is something of मेरे लिए change. मैं फील करती हूँ वो चीज कि कहीं से तो शुरुआत हुई भले वो Hmm. पैसों को लेकर ही हुई बट लोगों ने ये चीज डेवलप करी दैट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने बैंक अकाउंट को और आप टाइम के साथ थोड़ा आगे बढ़ो व्हेन इट कम्स Hmm. टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो यू कैन नॉट जस्ट स्टिक टू कैश ये चीज फोर्स करी गई थोड़ी सी पीपल वर नॉट कैरिंग कैश अब तो लोग शायद कैरी भी कम करते हैं Correct. बहुत कम करते हैं बिकॉज दे हैव पेटीएम्स एंड फोन पेज ऑन देयर फोन आई थिंक ये चीज मैंने बहुत डेवलप देखी है Hmm. इन द पास्ट 3-4 years ओनली आई थिंक पिछले 2 साल पहले तक भी लोग इतने एक्सेप्टेबल नहीं होते थे कि हम यूपीआई ले लेंगे नहीं कैश ही लेंगे बट आई नाउ तो आई फील दैट इट हैज चेंज कम्प्लीटली एंड व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आई थिंक पहले से रोड बेटर है कचरा नहीं। आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट कि रोड बेटर है if you see the road between Raipur to Bilaspur, it is actually when I get out of my house, मैं रायपुर पहुंचने के लिए वो सिर्फ 1.5 घंटा लगता है पहले वो 3-4 घंटे का जो सफर Hmm. होता था और वो 3 साल अगेन वो 3 साल पहले से 4 साल पहले तक नहीं था बिकॉज आई नो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया इंटर्न करने जाती थी और मेरे को पता है वो रोड कैसा था तो मेरे को जाना नहीं होता था उन दिनों में जब मेरे को बाय रोड ट्रैवल करना होता था Hmm. बट आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैज चेंज बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बिलासपुर में रोड बेटर हो गए आई थिंक दैट इज समथिंग दैट मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है बिकॉज मैं ऐसे विजिबली ये सब चीजें बहुत नोटिस करती हूँ Hmm. कि ये रोड ठीक नहीं है तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और फिर आई टेल अदर पीपल ऑल्सो एंड आई हैव मेड कंप्लेन्ट्स आई Hmm. हैव टॉक्ड व्हेन आई वाज इंटर्निंग एट टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे को बिलासपुर के मेयर से बात करने का मौका मिला था एंड आई वाज इंटरव्यूइंग हिम सो आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस सो इट वाज 3-4 years बैक एंड आई थिंक थिंग्स हैव चेंज आई वाज लकी इनफ कि मैं ये इश्यूज एड्रेस भी कर पाऊँ बट हाँ so I think changes तो है not just that but I think more than infrastructure and IT I feel the mindset of people जो लोगों का mindset है ना Hmm. वो बढ़ने से चीजें और बेटर होंगी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए खड़े हो Yeah. कि आपको जो चाहिए आई थिंक वो अभी भी थोड़ा कम है लोग थोड़ा सा डर जाते हैं अभी भी Hmm. बिलासपुर अभी भी थोड़ा सा सहमा हुआ रहता है तो Hmm. आई थिंक दैट इज समथिंग अगर वो माइंडसेट थोड़ा सा बदलेगा लोगों का तो आई फील वो चीज भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बट आई थिंक बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे हैं यूथ जैसे मैं बहुत सारों को जानती हूँ ख्वाब इंडिया है ब्रांडन है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो लोगों को अभी यूनिसेफ इंडिया ने बहुत ज्यादा बिलासपुर में इवेंट्स कराने का गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए Hmm. हैं तो आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छी सोच है और कि वो स्टार्ट करना चाहिए लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है
बहुत सारे इवेंट्स अब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प इन Yes. बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर. Yeah. So basically थोड़ा सा अब मैं स्मार्ट सिटी से होता हूँ तो थोड़ा सा मेरे को बूस्ट करना ही पड़ेगा. So there are a lot of changes which are coming up Yeah. as far as infrastructure is concerned, as IT is concerned. For example, infrastructure में we are bringing roads तो अच्छे हो ही गए हैं, हाँ जी. स्मार्ट रोड्स भी बन गए हैं. हाँ जी. प्लस फ्यू ऑफ द जो पुराने पुराने जो तालाब है, we rejuvenating हम्म. those तालाब. या. So that part that is also going to be there. We are going to have a happy street sort of footpath या. from there. So lot many things are coming up. ओके. Apart from this is as far the infrastructure is concerned, and we are also getting one conventional center at GGU, just outside GGU. ओह, रियली नाइस. Huge convention center of 3 floors plus shopping complex plus auditorium and all those things. So that's work has already started. And the most important thing of your interest will be like we are getting sewage treatment plant, because now ARPA is getting all the dirty water. डर्टी. So we are getting 3 STPs where this water will be purified and then let into the ARPA river. So these are some of the infrastructure projects. Now coming to IT part of it, we have a huge integrated command and control center which has come up at Tarbahar Chowk. Once you come from Tarbahar Naka towards that Tarbahar police station is there. You'll see a huge iconic building which has come up. So all the traffic lights of all the 41 junctions are controlled by there from there. Right. So all we have 523 plus cameras installed across Bilaspur. Yeah. And all the cameras are being monitored centrally from there. Yeah. So that is one big thing which has come up, and all the traffic signals have become intelligent in the sense the traffic signals themselves will sense the traffic and change the lighting timing of the lighting. It's not fixed lighting. Oh my God. Yes, and plus we have a provision for green corridor. We have provision of synchronizing the signals. Like generally happens ना कि एक सिग्नल अगर रेड है, हम जब दूसरे सिग्नल दे जाते हैं वो फिर रेड आ जाता है. रेड आ जाता है. हाँ, तो अभी हमने क्या किया है कि ये अपना सेंस करता है, और जैसे ये क्राउड एक जगह से दूसरे सिग्नल में पहुंचता है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, वो भी ग्रीन आ जाएगा. सो ट्रैफिक विल बी स्मूथ. सो ऐसे बहुत सारे एनालिटिक्स हैं. तो और कैमरा टैम्परिंग है, लोगों को ये करने का कैसे. वंस नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम आई विल टेक I यू टू will. दैट प्लेस. Definitely. I would really like that because So one thing जो आपने बोली traffic signals वाली चीज, I think that has gone up. अभी numbers of traffic lights in Bilaspur. हाँ, In general, I've seen they have increased. So I think that is again, if it's in the process of making Bilaspur better in हाँ. any way, I think that is good then. अब उसमें और एक भी है. सपोज यू आर violating any traffic rules ना, so challan will automatically generated. Your number plate will be captured, and the challan will be sent to your home. Home. So that also has started. Yeah, that is a good step, I guess. And so People have to be. what we are doing is we are taking students, college students and school students, and showing them practically as to how it happens, so that the traffic sense in them कि हाँ भैया हम red light cross कर रहे तो हमारा चालान कटेगा. चालान कटेगा और घर पे आएगा अब तो direct. There will be no getting out of it. No getting out of it. Okay, so that's the few things. And plus also we are having two more important IT projects. One is all the properties have been digitized now. Digitized in the sense property tax वगैरह हमको अभी जाके पे करना पड़ता है, तो अभी 1-2 महीने के अंदर में you'll be able to pay through your mobile phone. So you can scan that code in front of your house and scan करने के बाद your this will come. So all now अभी जो भी houses हैं वो सब records जो है ना वो registers में है. So now it is digitized. So that's a big project. And the third project will be of your interest is e-Pathshala, basically giving the content for the government schools on smart boards on their own. They can actually access the content of class 8 to 12 from their own mobiles and also from the laptop. And also we have given smart boards. Almost 120 smart boards have been put in different government schools across Bilaspur. So now. So now this we are planning to take it next level to the rural school, because once we have the content here,
तो हमको कुछ नहीं करना, बस रूरल स्कूल में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, दे विल बी एबल टू एक्सेस दिस। सो या उसमें हम थोड़ा सा नीट जेई वगैरह के भी क्वेश्चन पेपर्स वगैरह डालेंगे, सो दैट जो बच्चे ज्यादा कॉस्ट 1-1.5 लाख रुपए जो कोचिंग का क्लासेस नहीं होते, दे कैन ऑलवेज स्टडी एंड देन गिव द एग्जामिनेशन। सो दीज आर डेफिनेटली, द 3 वेरी important projects which you have undertaken. दैट्स So, रियली नाइस दिस ऑल। मतलब ये चीजें सुन के तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वी आर ट्राइंग टू गेट a hmm, very big place, and I think that will happen. hmm. And if you need me or my help, or you need Chhattisgarh in any way, we are definitely here. Sure, sure, sure. Um, People like you only will take Bilaspur to the next level, not people yeah. like me. No, no, definitely नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप जो कर रहे हैं that is on a bigger So, level. I think you हाँ, have that जो आपने कहा tier 3 से tier 2, I think you are actually working on that. करना है Uh, उसको। हाँ जी। आप लोगों को जैसे हेल्प चाहिए मेरे को, बस और कुछ नहीं। So we all together can do it. Okay. So that's all about Bilaspur, how it has transformed last 3 to 4 years, and the next 3 to 4 years, I think we are going to see a great change. Yeah. So now, where do you see yourself 5 years from now? Um, I think I want to see myself. Okay, so I am मैं नहीं बहुत ज्यादा 5 साल की प्लानिंग तो मैं नहीं कर बोलो पाती हूँ। 3 साल। हाँ मतलब मैंने सोचा हुआ है कि फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years, नेक्स्ट 3 साल में तो मुझे पता है अभी एक्चुअली आई एम गोइंग टू परस्यू माई सेल्फ इन टू अकेडमिक्स। मैं अभी आई एम appearing फॉर एज मच एज आई लाइक वर्किंग, बट आई ऑल्सो थिंक आई एम somebody who wants to be good in academics हमेशा से। So I am appearing for my NET UDC this year, and I think I'll pursue PhD. Along with that, I am going to work on humans of Chhattisgarh, and I'm going to travel thoda sa in Chhattisgarh. Okay. Uh, that is the plan. Me, Akash, and my team in general will shift slots, but I think we'll all go on a whole tourism to the track of Chhattisgarh and cover and see things and talk about those things. We Mm-hmm. have been planning this for a while now, and ये वाली चीज ह्यूमन ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ है। एंड देयर इज अनदर थिंग, पॉडकास्ट स्टार्ट करना है मुझे Okay. विद विमेन इन जनरल, कॉन्वर्सेशन Mhm. विद चांदनी करके फ्रॉम ह्यूमन ऑफ छत्तीसगढ़। आई हैव टू स्टार्ट दैट वेयर आई टॉक अबाउट हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर जितना भी वो नीचे चला जाए बट इट्स स्टिल पेट्रियार्कियल बहुत ज्यादा। So I want the women to get a platform to come and talk about their life in general. There are a lot of women who do not still get out of the house, Bilaspur में especially if I talk about. तो मैंने ये सोचा है there are also women जो कि फिर you must have heard of निधि जीवाश्रय, I don't know, जो dogs के लिए he Mhm. goes out of the way. So there is this lady who gets government support, Nidhi Tiwari? निधि तिवारी। Yeah, yeah, she was in my on my show. Yeah, so Hmm. she's a very good, she's like an Hmm. elder sister to me. Okay. एंड आई एम मतलब मैंने उनके थोड़ा बहुत मैं उनको हेल्प कर पाती हूँ कभी कभी विद डॉग्स, बिकॉज आई एम समबडी इनटू दैट पार्ट ऑफ लाइफ आल्सो। आई लव एनिमल्स। तो आई थिंक ऐसे लोगों की कहानियां मेरे सामने आना और मेरे प्लेटफॉर्म पे सामने Yeah. आना वो जरूरी है। ह्यूमंस ऑफ छत्तीसगढ़ में हमने उनकी स्टोरी की हुई है, बट उनकी Hmm. पूरी जर्नी मैंने ऐसे सोचा है पॉडकास्ट में स्टार्ट करूंगी, जैसे ट्रांसजेंडर विमेन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां अभी भी औरतों की कहानियां बाहर नहीं आई। So I True. think that is my focus with Good. podcast from HOC. I think, All oriented towards Bilaspur and Chhattisgarh. yeah, Great. everything, Everything. Yeah, I can make everything. it. Yeah, Great, great. I think that's good. So something the way I am going. yeah, So yeah, getting the women and starting a podcast is a good idea because मेरा भी यही yeah, कहना था अनसंग हीरोज इसलिए मैंने किया था बिकॉज जिनका ब्रांड नेम आता है उनका अगर प्लेटफॉर्म पे लेके आओगे तो हमारी व्यूअरशिप बहुत बढ़ जाएगी। बट right. लेकिन जो छोटे लोग जो काम कर रहे हो तो उनको हम ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, सो व्हाई नॉट स्टार्ट Exactly. टू व्यूअरशिप Exactly. कम होगा बट इम्पैक्टफुल होगा। Impactful होगा। सो दैट्स द Absolutely. बेसिक है। या And इतना हम आगे बढ़ चुका है ना कंटेंट वर्ल्ड, इतने लोग स्मार्ट हो गए हैं कि हाँ। दे नो व्हाट इज गुड कंटेंट एंड व्हाट इज फालतू का कंटेंट। आई फील तो आई हम्म। थिंक स्लो है, स्टेडी होगा पाथ, लेकिन बहुत अच्छा होगा। यू विल बी Absolutely. प्राउड विथ व्हाट यू आर डूइंग। आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स, अंदर का कंटेंट। That's what happening with me also. Very slow, but I am confident that one day it will be. हाँ जी, So हाँ because जी, intentions श्योर, are correct. हाँ जी।
Yeah. So, okay, Nidhi, nice. Sorry, Chandni, Nidhi कहाँ से आ गया? Yeah, Nidhi की बात किए ना. Chandni, nice talking to you, and it was great. And I think you'll go places. But then before going, signing off, I just want your message to the youth of Bilaspur, because the whole thing is motivating the youth of Bilaspur and Chhattisgarh. So, what is your message as a young, energetic, intelligent, outgoing journalist and social worker? I think one message that I have for the youth is that अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर 16-17 तक अपने आप को नहीं समझ पाए तो आप आपके पास टाइम बहुत है, आपके पास एनर्जी बहुत है जो कि आप सिर्फ अपने बेटरमेंट में लगा सकते हो। एंड आई थिंक दैट इज द मैसेज दैट आई हैव कि अपना पोटेंशियल, अपना कैलिबर को आइडेंटिफाई करके जस्ट पुट एफर्ट ऑन इट, एंड आई थिंक एवरीवन कैन गो प्लेसेस। अपना कैलिबर और अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट कि मैं बैठा हूँ तो रिजल्ट आ जाए। सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा होने से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि आपको नाउ दैट वी आर ग्रोइंग वी नो कि टेक्नोलॉजी और चीजें कितनी आगे बढ़ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना कैलिबर रियलाइज करके उस पर एफर्ट डालना। आई थिंक दैट इज द मैसेज दैट आई। Nice message, and I think you are absolutely correct. We should know, understand ourselves, and should know what is the potential. Like it's true that 99% of the people who are born are all born genius, but as they grow old, by the time they reach 19 to 20 years, they become average or below average because of the society, the circumstances, the school, the teachers, everybody. So yeah, should know the potential and work on your potential. You can be unstoppable, actually. Yeah, definitely. So thank you so much, Chandni, and wishing you all the very best. And thank you so much for being there on my show, and wishing you all the best for all your future endeavors. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. I'm glad to be on your show. Thank you. Yeah. Well, friends, that was Chandni. You heard how she, being from a very small city like Bilaspur, आज वो कहाँ पहुंच गई है, because of her aspirations, because of her dreams, because of her working on her passion. So if you have a passion, you know what you want to do, then sky is the limit. You can actually really be unstoppable. Taking these motivations from Chandni, I hope the youth of Bilaspur and Chhattisgarh will get motivated to understand what is their passion, work on their passion, and convert the passion into their profession. And it's very important that Chandni ने एक बहुत important बात बोली कि you should not forget your roots. Be humble and stick to your roots. And so whenever you become big, don't forget that you are from Bilaspur, and whatever you are today is all because of Bilaspur. So come back to Bilaspur, help in its growth, make Bilaspur, help in converting Bilaspur from a tier 3 city to tier 2 city, so that you start generating employment, generating more and more factories, more and more industries keep coming to Bilaspur. So take care of yourself till we meet next week with one more unsung hero. Take care and Jai Hind.